हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू Hitbullseye। माय नेम इज़ मनीष और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अगस्त लास्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो विदाउट एनी मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस बार के। सबसे पहले तो 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ बीन अपॉइंटेड। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन अ प्रीवियस वीडियो एज वेल, बट एट दैट टाइम हिज अपॉइंटमेंट was just finalized. Now he has actually taken oath and assumed the chair of the Chief Justice of India. So this we will discuss. Then world's lowest fertility rate, United Nations की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे कम fertility rate जिस कंट्री का है, we will discuss about that. Then in a tech initiative, Google has announced a program for developers in India to train the developers. Google has announced this specific program. Then Nagaland has got its second railway station in the last more than a century. So it is basically signifies the connectivity towards northeast from mainland India. Then One Nation One Fertilizer program, इसके बारे में हम देखेंगे. A new bridge called Atal Bridge has been inaugurated in Ahmedabad. We'll see what is important about that. The National Sports Day मनाया हमने 29th of August को, उसके बारे में बात करेंगे. Virat Kohli has created a new record, adding a new feather to his cap. He has created a new record. We will discuss what that record is. Famous classical dancer Mallika Sarabhai has released her autobiography or her memoir. We'll see what the name of that book is. Then India's first earthquake memorial has been inaugurated in Gujarat. We will see कि ये memorial कहाँ पे बनाया गया है और उसकी क्या significance है. Then joint military exercise वज्र प्रहार 2022. We'll see कि ये कौन सी दो countries के बीच में हुआ है. Then Miss Diva Universe 2022 किसे चुना गया है? We will also see that. Then Mr. Gautam Adani, ये न्यूज़ में थे. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस नो वाई ही वॉज इन न्यूज़. ही हैज़ बिकम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड. देन Mikhail Gorbachev has passed away. We will see who was Mikhail Gorbachev and his significance in world history. And finally, rural Olympic games have been organized in Rajasthan. We will see what is the significance of these games. तो एक एक करके देखते हैं सभी न्यूज़ को ब्रीफ में. 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. सो मिस्टर उदय उमेश ललित, इनको ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्टर की नई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने. So that is how the Constitution of India says that the Chief Justice of India shall be administered the oath of office by the President of India, and this photo is going to explain that to you. So he has become the 49th Chief Justice of India, and he will be holding the office for approximately 3 months from now. So although it is a less it's not a very lengthy tenure, it's a short tenure in fact, but the position is so significant that a person or the occupant can make a lot of difference even in such a short span of time. So it remains to be seen what Justice UU Lalit will do to the office. And also an important fact is that he is one of the 6 senior counsels who have been directly elevated to the Supreme Court. आज तक Supreme Court में सिर्फ 6 ऐसे जजेस हुए हैं जो directly advocate से Supreme Court के जज बने. Otherwise all the other judges of the Supreme Court were first elevated as the judges of High Court, then they got transferred, promoted from High Court to the Supreme Court. But he is only the 6th judge of the Supreme Court ever who was elevated from the bar directly to the Supreme Court and did not ever become a judge of the High Court. So that is another distinction that he has. Next, world's lowest fertility rate. So fertility rate basically होता क्या है? Fertility rate is the number of children that a woman of reproductive age gives birth to. That is known as fertility rate. So fertility rate सबसे कम है साउथ कोरिया का. साउथ कोरिया हैज़ अ फर्टिलिटी रेट ऑफ जस्ट 0.81 चिल्ड्रन, विच इज़ वेरी लेस. So during their lifetime, an average woman gives birth to just 0.8 children, figuratively. That means the population of South Korea is declining because the replacement level is 2.1. That means if a woman of reproductive age gives birth to 2.1 children, only then the population remains stable or grows a bit, which is necessary. But यहाँ पे 0.81 है, इसका मतलब साउथ कोरिया की पॉपुलेशन कम होगी आने वाले टाइम में. एंड द रिपोर्ट सेज सो
right? So according to United Nations global population projections and the World Bank data, its population will fall by 53% by 2100. तो इस सेंचुरी के एंड तक इसकी पॉपुलेशन 53% कम हो जाएगी, यानी कि आधी, जितनी अब है उससे आधे से भी कम रह जाएगी. सो दैट इज द प्रोजेक्शन. नेक्स्ट, गूगल अनाउंसेस अ प्रोग्राम फॉर डेवलपर्स इन इंडिया. गूगल ने इंडिया में जो वेब डेवलपर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंडर 1 लाख इंडियन डेवलपर्स को ट्रेन किया जाएगा. 1 lakh इंडियन डेवलपर्स विल बी ट्रेन्ड इन cyber security because it's going to be a very important area moving forward. This will be part of the cyber security roadshow campaign by Google. और इसमें होगा क्या, बेसिकली एक Android और एक Google Cloud, इन 2 फील्ड्स में प्रोग्रामर्स को ट्रेन किया जाएगा. So the Google Cloud upskilling program will focus on commercial development of security administrators, while Android upskilling program will serve developers creating apps for consumer use. So it's better, you know, being like a step being taken to promote cyber security. Next, Nagaland gets its second railway station in the last 119 years. तो नागालैंड पिछले 120 सालों में नागालैंड को सिर्फ दूसरा ही रेलवे स्टेशन जो है वो अब मिला है. एंड द नेम ऑफ द स्टेशन इज शोखुवी. इट इज शोखुवी, as you can see here also. So this is the second railway station after a gap of more than a century. That is what is significant. इससे पहले दीमापुर रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, और ये शोखुवी जो है ये दूसरा रेलवे स्टेशन है. एंड इट वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, राइट. तो यहाँ से डोनी पोलो एक्सप्रेस जो है ट्रेन का नाम है, इट रैन डेली बिटवीन गुवाहाटी एंड नहरालागूं इन अरुणाचल प्रदेश. बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी का बहुत इशू है, तो जब से ब्रॉड गेज ट्रेन वहाँ पे जानी शुरू हुई है, दिस प्रॉब्लम हैज स्टार्टेड टू सॉर्ट. नेक्स्ट, वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्रोग्राम. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू initiate this program where one nation one fertilizer means every fertilizer will have, the government ने एक order issue किया है that requires all businesses to market their goods under the brand name Bharat to standardize fertilizer brands across India. पूरे इंडिया में फर्टिलाइजर ब्रांड्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए उनके नाम के आगे भारत जो है वो लगाया जाए. So under this order, irrespective of the company that manufactures it, whether public or private sector, all fertilizer bags, चाहे वो यूरिया के हों, चाहे डायमोनियम फॉस्फेट के हों, चाहे वो पोटाश के हों, एनपीके के हों, सबके आगे भारत वर्ड लिखा जाएगा. This is a move that is being opposed by so many traders, so many companies that manufacture fertilizer, because they will lose their brand value. It will be like standardization, it will be like uniformity being maintained, but at the same time it will kill their brand value also. So fertilizer firms have reacted negatively to the decision that it will destroy their brand value and market distinction. So it remains to be seen कि ये program कितना successful हो पाता है. Next, so this pedestrian bridge called Atal Bridge has been inaugurated in Ahmedabad in Gujarat by the Prime Minister. और it is a pedestrian only bridge. ये साबरमती रिवर के ऊपर बनाया गया है, and it is a part of the effort to strengthen the river front development project. तो river front को develop करना, जैसे foreign countries में होता है कि एक river जो है वो शहर के बीच में से जा रही है और उसके दोनों तरफ जो उसके banks हैं, they are properly developed for tourist purposes also and for cleanliness purposes also. तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर भी ये चीज़ जो है वो शुरू की गई है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट एफर्ट ओनली. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी. नेक्स्ट, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं ऑन एवरी 29th of August, एंड द रीज़न इज़ the birth anniversary of Major Dhyan Chand, who was the wonder boy of what you can say hockey in India. He was known as the magician in hockey. So he was born on this day in 1905, और इसलिए इस दिन को हम National Sports Day मनाते हैं on 29th of August. Also कुछ देर पहले ही
a few months back जो स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, उसका नाम भी गवर्नमेंट ने बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया था. सो अनदर न्यूज़ दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट. नेक्स्ट, विराट कोहली ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है. सो विराट कोहली हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने हर फॉर्मेट के 100 मैचेस खेल लिए हैं, लाइक 100 T20 इंटरनेशनल्स, 100 टेस्ट मैचेस, 100 वनडे इंटरनेशनल्स. पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने तीनों के 100 मैचेस खेल लिए हैं. फर्स्ट इंडियन एंड ओनली द सेकेंड प्लेयर ओवरऑल इन द वर्ल्ड to have played 100 matches each in all 3 formats of the game. इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड बना चुके हैं that was न्यूजीलैंड बैट्समैन रॉस टेलर. उन्होंने भी तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैचेस कम से कम खेल लिए हैं. इसके अलावा और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने 2 फॉर्मेट्स में 100 मैचेस से बहुत ज़्यादा खेल लिए हैं, लेकिन तीसरे फॉर्मेट में 100 मैचेस नहीं खेले हैं. सो ही इज़ द सेकेंड इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन टू हैव रीच्ड दिस डिस्टिंक्शन. नेक्स्ट, मल्लिका साराभाई जो कि एक बहुत ही एक्लेम्ड क्लासिकल डांसर हैं. उन्होंने अपनी एक नई बुक लॉन्च की है, हर मेमोयर. द नेम इज़ इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग. इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट्स विद लिविंग. सो शी comes from a very well known family. Her mother was Indian classical dancer Mrinalini Sarabhai and her father was Vikram Sarabhai, the nuclear scientist, the space scientist Vikram Sarabhai. So Vikram Sarabhai and Mrinalini Sarabhai gave birth to Mallika Sarabhai, who is herself a proclaimed classical dancer. Right, so she is an accomplished Kuchipudi and Bharatnatyam dancer and specialized in using the arts for social change and transformation. तो इस बुक में इन्होंने अपनी लाइफ की सारी स्टोरी जो है वो शेयर की है. Next, India's first earthquake memorial. See, in the year 2001, in Bhuj in Gujarat, there was a huge and devastating earthquake that killed thousands of people. तो उसी जगह पर उसके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, which is known as Smriti Van. Smriti means memory. So its name will be Smriti Van. और ये भुज गुजरात में बनाया गया है. So this is how it looks like. So this is to pay tribute to those approximately 13,000 people who were killed in that particular earthquake. 26 जनवरी 2001 को ये earthquake आया था जिसका एपिसेंटर भुज में था. So this is the first such memorial in the country and it is spread over 470 acres in Bhujio Hill near Bhuj town. इंडिया का पहला earthquake memorial जो है ये बनाया गया है. नेक्स्ट, वज्र प्रहार 2022 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूएसए के बीच में कंडक्ट की गई है एंड दिस वाज द 13th एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज. ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के बकलोह में. इससे पिछला जो वज्र प्रहार का किया गया था, वज्र प्रहार एक्सरसाइज जो की गई थी, इट वाज द 12th एडिशन और वो हुआ था वॉशिंगटन यूएसए में. सो सिंस इट्स अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज तो यूजुअली एक बार एक कंट्री में होती है, दूसरी बार दूसरी कंट्री में होती है. सो इट्स लाइक इट हैपेंस बाय रोटेशन. सो इंडिया यूएसए में ये होती है एंड इट्स अ 21 डे जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज. इसमें दोनों कंट्रीज में एयरबोर्न ऑपरेशन, स्पेशल ऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म और जॉइंट एनवायरनमेंट जो है वो जॉइंट एनवायरनमेंट में किए जाते हैं अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क और यूनाइटेड नेशंस चार्टर. राइट, तो इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं एंड दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज इंक्रीजेज द कॉन्फिडेंस फॉर इंटरऑपरेबिलिटी इन द आर्म्ड फोर्सेस. नेक्स्ट, मिस डीवा यूनिवर्स. सो शी हैज बिकम मिस डीवा यूनिवर्स. So who is she? She is Divita Rai from Karnataka. Divita Rai from Karnataka has won Miss Diva Universe 2022. और ये अब 71st Miss Universe कंपटीशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी. लास्ट ईयर यही क्राउन हरनाज संधू जो हैं उन्होंने जीता था. हरनाज संधू हैड बिकम मिस यूनिवर्स, तो ये बनी है मिस डीवा यूनिवर्स. सो शी विल नाउ गो टू मिस यूनिवर्स जो ओवरऑल मिस यूनिवर्स क्राउन होता है. और इसके अलावा प्रज्ञा अयगरी
of Telangana has been declared Miss Diva Supranational 2022. तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. दिविता राय Miss Diva Universe and Praganya Ayagari is Miss Diva Supranational. Next, Bloomberg's Billionaires Index. Mr. Gautam Adani has become the first Indian as well as first Asian to break into the top 3 richest people in the world. He has become the 3rd richest person after Elon Musk and Jeff Bezos. So Elon Musk, who is the founder and CEO of Tesla and SpaceX, he's at number 1 position with approximately $251 billion of fortune. So this is Mr. Musk. और दूसरे नंबर पर आते हैं your Jeff Bezos. He has a fortune of approximately $180 billion. और तीसरे नंबर पर आते हैं गौतम अडानी, and he has a fortune of approximately $137 billion. तो अदानी ग्रुप के चेयरमैन हैं. That has a lot of business lines, ports operations, airports operations, mining, petrochemicals, बहुत सारे इनके businesses हैं. This is the first time an Asian person has broken into the top 3 of the Bloomberg Billionaires Index. और इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है 3rd नंबर पे? It was Bernard Arnault. ये थे अब तक के 3rd richest. Now he is the 4th richest. So Bernard Arnault is the founder and CEO of Louis Vuitton, the luxury brand Louis Vuitton. Right, so now it is Mr. Gautam Adani who is the 3rd richest person in the world. Next, so this is sort of an obituary. So Mr. Mikhail Gorbachev, who was the last president of the Soviet Union. So from 1985 till 1991, for those 7 years, the last 7 tumultuous years of the USSR, he was the president of USSR. And he played a key role in trying to transform the Soviet Union into somewhat open economy, somewhat liberal economy. But it was too little, too late, and by that time, all the units of the Soviet Union started demanding independence. But his role cannot be denied. He played a very difficult role in trying to save Soviet Union from disintegration, but of course he could not do that. इन्होंने 2 उस टाइम पे policies launch की थी, which were perestroika and glasnost. Glasnost and perestroika. So glasnost का मतलब है openness towards the world, right? Because the Soviet economy was quite closed till that time. So to open towards the world, and perestroika was like economic reform of the society. But it was too little, too late, and he could not stop the disintegration of USSR. So he has now died, and he was a winner of so many accolades, prizes, and awards all over the world. And finally, the Rural Olympic Games are being held in Rajasthan. So it may sound a bit odd कि Rural Olympic Games क्या होती हैं, but it's like they say that the talent in India is hidden in the villages, especially if we talk about the games or the sports in which physical stamina and physical fitness matters. Because in rural areas, people usually do a lot of physical labor, for the day-to-day tasks. तो इसीलिए उस टैलेंट को बाहर निकालने के लिए the Rural Olympic Games are held. तो राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने इनॉग्रेट की. Its name is राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स, और इसका इनॉग्रेशन किया गया जोधपुर में. इसमें 44,000 विलेजेस, पूरे राजस्थान में जितने विलेजेस हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और 30 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 9 लाख जो हैं वो विमेन हैं. इसमें वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो जैसी गेम्स जो हैं वो प्ले की जाएंगी. तो 11,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें ये ऑर्गेनाइज की जाएगी, एंड इट इज़ एन आउटरीच टू द रूरल पॉपुलेशन, स्पेशली रूरल यूथ. ये एक मौका होता है क्योंकि उन सभी गेम्स में एटलीस्ट एक सिलेक्टर या कोच जो है वो होता है, और अगर वो कोई भी टैलेंट को जो है वो इफ़ दे आर एबल टू ट्रेस इट, तो उन्हें आगे स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे रिकमेंड किया जा सकता है, एंड दैट इज़ हाउ टैलेंट कैन बी ट्रेस्ड. सो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स इन दीज इवेंट्स can be promoted for further participation in national and international sports events. So it's a golden opportunity for the rural youth.
जिन्हें एक तरह से फ्री ट्रायल जो है वो मिल जाता है, एंड इफ़ दे शो रियली गुड परफॉर्मेंस देन दे कैन बी रिकमेंडेड फॉर फर्दर ट्रेनिंग कैंप्स फॉर फर्दर लेवल ऑफ गेम्स. So it's a really good way to to spot the talent, because 30 lakh is a big sample size. That means all the villages participating in the games. So that was all for this week's current affairs. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, do subscribe to our channel, hit the bell icon, or also let us know your comments in the comment section. Thank you so much and take care.